Morning, dear student. So we are doing Sanhati Karya Sadhika, right? And we have seen the translation. Now today we have to see the question answer, right? So first question is exercise. विकल्पेभ्यः समुचितम् उत्तरं चित्वा लिखत, right? ओके जो ऑप्शन दिया है उसमें से सही ऑप्शन लिखना है. सो आई हैव मार्क द आंसर ऑल्सो. फर्स्ट इज प्रभात काले वायसः कम अपश्यत. ऑप्शंस आर कपोतम, व्याघ्रम, वृक्षम, मूषकम. सो वी हैव टू राइट द आंसर ख व्याघ्रम. गगने कः सपरिवारः व्यसर्पत. राइट द ऑप्शंस आर वायसः, पक्षीराजः, चित्रग्रीवः, मयूरः. सो वी हैव टू राइट द आंसर चित्रग्रीवः. थर्ड विपत्काले किं करणीयम्. ऑप्शंस आर विस्मयस्य अवलंबनम, प्रतीकारः, पलायनम, धैर्यस्य अवलंबनम. सो आंसर इज धैर्यस्य अवलंबनम. राइट डियर स्टूडेंट. फोर्थ इज तृणैगुणत्वमापन्नैके बध्यन्ते. ऑप्शंस आर मत्तदन्तिनः, सिंहः, कपोताः, मूषकाः. मत्तदन्तिनः द आंसर इज. फिफ्थ मूषकराजेन कपोतानां बन्धनानि केन छिन्नानि. ऑप्शंस आर दन्तैः, मुखेन, अस्त्रेण, शस्त्रेण. द आंसर इज दन्तैः. राइट डियर स्टूडेंट. Then sixth, सह तीक्ष्णदन्तैः जालं ब्लैंक प्रायतत. छित्त्वा, छेदनीयं, छेत्तुं, छिन्नम्. आंसर इज छेत्तुं. राइट. सेवेंथ वयं पदस्य एकवचनं किम् अस्ति. तो अहं, त्वं, सः, आवां. तो अहं. राइट. एथ रेखाङ्कितपदस्य समासनाम लिखत. व्याधेन तण्डुलकणान् विकीर्य जालं विस्तीर्णम्. द वर्ड इज तण्डुलकणान्. राइट. उसमें ऑप्शन से षष्ठी तत्पुरुष, द्वंद्व, द्वितीय तत्पुरुष, समाहार द्वंद्व. राइट. सो आंसर इज षष्ठी तत्पुरुष. राइट. देन नाइन्थ स्म प्रयोगं कुरुत. विहगाः तत्र न्यवसन्. ओके. ऑप्शंस आर न्यवसन्ति स्म, निवसन्ति स्म, निवसति स्म, निवसन स्म. राइट. तो आएगा ख निवसन्ति स्म. राइट डियर स्टूडेंट. देन सेकेंड एक वाक्येन संस्कृत भाषया उत्तरत. राइट. आंसर इन one sentence. Okay. First, तण्डुलकणान् अवलोक्य कपोताः कीदृशाः अभवन्. So answer will be कीदृशाः की जगह लिखोगे लुब्धाः and you will write the whole answer. तण्डुलकणान् अवलोक्य कपोताः लुब्धाः अभवन्. Right. Then second, बद्धाः कपोताः कम तिरस्कारं कुर्वन्ति स्म. तो आप लिखोगे बद्धाः कपोताः यस्य वचनेन जाले सपतं तं कपोतं तिरस्कुर्वन्ति स्म. राइट. देन थर्ड अल्पानां वस्तूनां संहतिः कीदृशी भवति. कीदृशी की जगह लिखोगे कार्यसाधिका. तो आंसर विल बी अल्पानां वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका भवति. ओके. फोर्थ जालेन सह उत्पतिताः विहगाः कुत्र गच्छन्ति. तो जालेन सह उत्पतिताः विहगाः मूषकराजस्य समीपं गच्छन्ति. ओके. फिफ्थ भूतले शङ्काभिः किम् आक्रान्तं भवति. तो भूतले शङ्काभिः दुर्लभं सर्वम् अन्नं पानं च आक्रान्तं भवति. राइट डियर स्टूडेंट. भूतले शङ्काभिः
दुर्लभम सर्वम अन्नम पानम च आक्रांतं भवति. Right? So this is our second exercise. Now we go to third exercise. Okay? देखो, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत. Right? रेखांकित पदानि आधृत्य means instead of the underlined word, use question word and make question. Right? देखो उसमें क्या है. कदा मीन्स when, केन मीन्स by whom, कस्य मीन्स whose, कम मीन्स to whom, किम कृत्वा मीन्स by doing what, कुत्र मीन्स where and किम मीन्स what. Right? देखो फर्स्ट है गोदावरी तीरे विशालः शाल्मली तरुः अस्ति. ओके, सो अंडरलाइन वर्ड इज गोदावरी तीरे. ओके, इट शोज द प्लेस. तो वो निकाल के हम क्या लिखेंगे, कुत्र. कुत्र विशालः शाल्मली तरुः अस्ति, क्वेश्चन मार्क. ओके, डोंट फॉरगेट टू मार्क क्वेश्चन. ओके, वंस अगेन, कुत्र विशालः शाल्मली तरुः अस्ति. ओके, देन सेकेंड, व्याघ्रेण जालं विस्तीर्णम. अंडरलाइन वर्ड इज जालम. जालम की जगह क्या आएगा बेटा, किम. व्याघ्रेण किम विस्तीर्णम. राइट, व्याघ्रेण किम विस्तीर्णम, क्वेश्चन मार्क. थर्ड, व्याघ्रेण तण्डुलकणान् विकीर्य जालं विस्तीर्णम. विकीर्य, अंडरलाइन वर्ड इज विकीर्य, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, किम कृत्वा. राइट? सो आंसर विल बी व्याघ्रेण तण्डुलकणान् विकीर्य, व्याघ्रेण तण्डुलकणान् किम कृत्वा जालं विस्तीर्णम, क्वेश्चन मार्क. राइट डियर स्टूडेंट, वंस अगेन, व्याघ्रेण तण्डुलकणान् किम कृत्वा जालं विस्तीर्णम. फोर्थ, वायसः प्रभात काले व्याघ्रम अपश्यत. राइट? तो क्या आएगा बेटा, प्रभात काले, इट शोज टाइम. टाइम आता है तो कदा. तो वायसः कदा व्याघ्रम अपश्यत, क्वेश्चन मार्क. राइट? देन फिफ्थ, चित्रग्रीवस्य मित्रं मूषकराजः अस्ति. चित्रग्रीवस्य, instead of that word, which word will be there, kasya. कस्य मित्रं मूषकराजः अस्ति, क्वेश्चन मार्क. ओके, सो डियर स्टूडेंट, when you are turning the sentence into question, then you have to make question mark. Okay, don't forget to put question mark while making question. Okay, so now fourth exercise, घटनाक्रमानुसारं वाक्यानि लिखत. घटनाक्रमानुसारं means, dear student, sequence, arrange in sequence. Okay, so the following arrange in sequence the following sentence. Okay, I am reading out the sentences. First, अनन्तरं ते सर्वे जालेन बद्धाः अभवन्. मुषकराजेन स्वकीयैः तीक्ष्णैः दन्तैः सर्वेषां बन्धनानि छिन्नानि. थर्ड, वायसः कृतान्तमिव द्वितीयम् अटन्तं व्याघ्रम् अपश्यत्. फोर्थ, तदत्र धैर्यमवलम्ब्य इदानीम् एव क्रियताम्. फिफ्थ, वृद्धानां वचनम् आपत्काले ग्राह्यम् एव. सिक्स्थ, इति विचिन्त्य कपोताः सर्वे जालम् आदाय उत्पतिताः. ओके, सो नाउ द आंसर विल बी, देखो बेटा, आप ऐसे सेंटेंस दिए होंगे ना आपको, तो आपको सीक्वेंस में लिखना है. सो फर्स्ट सेंटेंस यू विल राइट द थर्ड वन. ओके, वायसः कृतान्तमिव द्वितीयम् अटन्तं व्याघ्रम् अपश्यत्. राइट? That will be the first sentence. Then second,
Fifth one, वृद्धानां वचनम् आपत्काले ग्राह्यम् एव. Right? Then third will be first. अनन्तरं ते सर्वे जालेन बद्धाः अभवन्. Right? Then fourth will be the fourth one. तदत्र धैर्यम् अवलम्ब्य इदानीम् एव क्रियताम्. Right? Then fifth will be sixth. Okay, sixth will be the fifth one. इति विचिन्त्य कपोताः सर्वे जालम् आदाय उत्पतिता. Right? And second will be the sixth one. मुषकराजेन स्वकीयैः तीक्ष्णैः दन्तैः सर्वेषां बन्धनानि छिन्नानि. Okay, so you will write in sequence. Okay, समझ में आया बेटा? Now we go to fifth one. Right? क्या है? मातृभाषायाम् उत्तराणि लिखत. मातृभाषायां means we are studying in English medium, so we have to write the answer in English medium, in English. Okay? So first question is, what did the crow think on seeing the hunter? What did the crow think on seeing the hunter? hunter को देख के क्रो को क्या हुआ था बेटा कि आज तो सुबह में ही मुझे अच्छे दर्शन नहीं हुए, इसलिए आज कुछ बुरा होने वाला है, ऐसा उसको हुआ था ना पहले, है ना, इसलिए ये क्या हुआ उसको. सो द क्रो नेम्ड लघुपतनक saw the hunter who was wandering in the forest in the morning. Okay, on seeing him, the crow thought that it is not the good omen. He became very much worried. And he began to think that something bad is going to happen today. Okay, the hunter looked like the Yamraj to him. Right? इस तरीके से आप लिखोगे. Dear student, I have shown you only the guideline. Okay, you will write by modifying it. Second, what did Chitragriva say to pigeons tempted by rice grain? Okay, rice grain देख के जो pigeons थे वो greedy हो गए, तो ये चित्रग्रीव ने क्या कहा? तो क्या लिखोगे? The pigeons while flying saw the rice pieces on the ground. They became greedy by the sight of the rice pieces. Right? And when Chitragriva saw that they have become greedy and they are ready to eat it, are ready to go down on the ground, he told him that how can the rice pieces be here in this lonely forest? I don't think it indicates something good. A good calamity may befall us. So don't be reckless. Right? ये बात जो उसको कही, that you have to write. Okay. Third, what was the reaction of the arrogant pigeon to the words of the old? Right? What was the reaction of the arrogant pigeon? Arrogant means अभिमानी जो pigeon था, उसने इसके वर्ड सुने तो क्या उसको हुआ? ओके, तो लिखना कि the pigeons became greedy to eat the rice pieces. At that time, Chitragriva, the king of pigeons, warned them not to go down and eat,
because this is the lonely forest and the rice pieces cannot be available there. Okay, by hearing these words, the arrogant pigeon said that if we go on thinking like this, even in food and water, then what will happen? It will not be possible to eat. Okay, and everything could not be seen with doubt. Okay, but if we think too much about these things, living will be impossible. Okay, this thing you have to write. Then fourth, how did pigeons free themselves from the net? कैसे फ्री किया? The pigeons, okay, pigeons got trapped in the net. They all fly together, okay, by using their one mind, and they went near the king of mice. By reaching there, and the king of mice was the friend of Chitragriva. So he cut down the net by his sharp teeth, right? And the pigeons were made free. Okay, so you have to write this. Then matrubhashayam anuvadam kuruta. Okay, there is only one sentence that you have to write. First, विविधेभ्यः देशेभ्यः समागताः विहगाः तत्र रात्रौ निवसन्ति. राइट, तो क्या आएगा बेटा? The birds from various countries stayed there at night. Right? Second, चित्रग्रीव नामा कपोतराजः परिवारेण सह गगने व्यसर्पत्. Right? Chitragriva, the king of pigeon, was going in the sky with his family. Right? Third, तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वे कपोताः तत्र जाले उपाविशन्. Right? तस्य तद्वचनं श्रुत्वा means on hearing his words. Okay, on hearing his words, all the pigeons sat on the net there. Okay, on hearing his words, all the pigeons sat on the net there. Fourth, व्यागतान् जालापहारकान् अवलोक्य पश्चात धावती. राइट, तो क्या लिखेंगे बेटा उसमें? Having seen those pigeons carrying away the net, the hunter ran after them. Right? Once again, having seen those pigeons carrying away the net, the hunter ran after them. Fifth, तीक्ष्णैः दन्तैः बन्धनानि छिन्नानि. तीक्ष्णैः दन्तैः means by sharp teeth. Okay, with the sharp teeth the ties were cut. Okay, dear student, and then if the question is asked, what is the moral of the story? Then you will write that united we stand, divided we fall. If we are united, then we are able to face any situation. Right, dear student? And if we are divided, then we are not able to solve any problem. This you have to write. The question is not given, but I have only tell you that the moral of the story. तो ये आपको याद रखना है. Right, dear student? So I hope you have understood this chapter well. Okay, and in next class we will go to the next chapter. Right, dear students? Okay, goodbye and have a nice day.